हेलो गाइस। मेरा नाम है मयंक चौधरी और ये मेरी पहली वीडियो होगी अ, इस चैनल पर। तो हाँ, सो आज मैं आपको इस वीडियो पे बताऊंगा कि हम नोशन पे कैसे एक एरिया बना पाए, मतलब एक पेज बना पाए जहां हम हमारे क्लाइंट्स के डेटा को रख सकें। मतलब हमारे क्लाइंट के नाम, नंबर, इंफॉर्मेशन, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम वगैरह वगैरह, और क्या प्रोग्रेस है उनको लेके, वो सब कहाँ रिकॉर्ड करें नोशन की मदद से। तो हम इसी काम को पहले कंपनीज और बहुत सारी एजेंसीज एक्सेल की यूज़ से करती थी, एक्सेल शीट्स से करती थी। बट आजकल डिजिटली सब एडवांस हो चुका है, तो हमें भी एडवांस होना पड़ेगा। तो हम इसीलिए नोशन का यूज़ करेंगे। तो बहुत लोग को डाउट होता है कि नोशन पे हम कैसे पेजेस क्रिएट करें या फिर जो हम चाहते हैं वो क्रिएट करें। तो बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, अब मैं आ चुका हूँ और मैं आपको हर चीज़ बताने वाला हूँ। और ये सब बिल्कुल फ्री होगा और मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड होगा, सो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले आप अपने आईडी को लॉगिन कर लीजिए, मैं भी कर लेता हूँ। सो मैं यहाँ गया और मैं अपनी आईडी को यहाँ से, मतलब मैंने भी अभी तक आईडी बना के नहीं रखी, आप ऐसे सोचिए। और मैंने अपनी गूगल आईडी से कर लिया, क्रिएट हो गया। और अब आपको डिसाइड करना है कि आप क्यों कर रहे हैं। तो मैं फॉर माई टीम करना चाहूँगा, फॉर पर्सनल यूज, फॉर स्कूल, 3 ऑप्शन हमारे पास, तो हम कर लेते हैं फॉर माई टीम। जस्ट फॉर क्लैरिफिकेशंस, what kind of work do you do? So I'm a founder and CEO. What is your role? This one. Size of your company? This one or more. तो आप अदर सिलेक्ट कर लें या फिर सभी को सिलेक्ट कर लें, ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन होगा। Then continue. Then you have to choose an icon whichever you want to. You can upload your custom icon too. So now let's select the icon just for now. Let's go with this one because this is a bomb. Now select your company. So let it be test. Now let's continue this. It will take a little bit of time. Just set up each and everything for you. And now it's done. We can send invites to our team member, or for ease, we can just click here and get a link and we can share it with our team members. So let's click on this, take me to the Notion, and then you don't have to do anything. Just select anything you want to. Yeah, we are done. Now, do nothing. Just click on here. Team spaces. We are team spaces. Now delete this all if you don't want them to be. But let's just not do that. Okay, everything's all right. Click on plus. Sorry, not this one. Go here. Click on plus and then go to blank pages. And now select the name client area. And this is an empty page, as you can see. Now you just have to do a small thing. Go here and type whatever type. So press space to enter the AI mode. Create me an area where I can store the information of my clients as in a formats: serial number, name, date, Instagram, WhatsApp, it's okay, date, and then we can WhatsApp or whatever you can want it in your format, you can add it up to. I've added WhatsApp. Yeah, it's just it. Oh, or we can add source to from where we have found that client and whatever it is, and progress, baby. Plus, write yes to this 15. And now just hit enter and just wait, and it's done for you. It's that much simple. And now if you want, you can just remove it. It's all upon you. You can add an icon here too. Let's do this.
You can add a cover page too like this, and if you want to change it to a gradient or you want to upload your own or link or unsplash, you can do whatever you want. So let me select this one because it looks very fancy and good. So selected this, and yeah, we are done. Serial number is done. Let me enter the name. My name is here. The date will be here. The Instagram profile ID will be here. WhatsApp, the source, the progress, and we are done. And if you want to change the color into it too, this is the background one. I like this. And if you want to change the text color, you can just let's say it's done. Thank you for watching the video. Stay tuned for more.